Welcome to A Topper's Villa. हेलो टॉपर्स। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर्स, सिग्नल कंडीशनिंग, इन सारे फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड फॉर मेजरमेंट्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है हमें मेजरमेंट्स के लिए, और इस मेजरमेंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, हमारे एप्लीकेशंस के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, या तो मैकेनिकल हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ये भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एक हो सकता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट्स इन टर्म ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो मेजर करते हैं क्वांटिटी को बाय ऑब्जर्विंग द आउटपुट इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। और भी क्लासिफिकेशन देखें तो एक होते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और एक होते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। और डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि डिफ्लेक्शन हमारा बेसिस बनता है मेजरमेंट का, जैसे कि हमारा पीएमएमसी एमीटर हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर। और या फिर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट देखें तो उसमें जीरो या नल इंडिकेशन किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के। अब हम लोग डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और मेजर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे अभी गो थ्रू करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि है एक्यूरेसी। तो व्हाट इज मीन्ड बाय एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेसी क्या होता है, ये होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। Accuracy is degree of closeness with which an instrument reading approaches to the true value of the quantity being measured। जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू जो होता है उससे कितना क्लोजनेस है हमारे वैल्यू का, वो वैल्यू, वो क्लोजनेस का डिग्री हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। ओके, तो एक्यूरेसी जो होता है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं हम लोग किस टर्म्स में, तो या तो इनएक्यूरेसी के टर्म्स में या फिर लिमिट्स ऑफ एरर के टर्म में। इट कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिट्स ऑफ एरर। एक्यूरेसी हमारे ट्रुथ को, हमारे ट्रुथ वैल्यू को कंफर्म करता है। मींस वी कैन से दैट एक्यूरेसी signifies the conformity to truth। Okay, so we can write this accuracy signifies conformity to truth। So now if we'll see the next characteristic, this is precision। So what is precision? In the various places you can see the term accuracy and precision, these both are used interchangeably, but this is not quite true। Okay, the precision, we can say this is a measure of reproducibility of the measurements। Okay, so again here this reproducibility term is also a characteristic of instrument। Okay, so precise, the term precise simply means what? If you can think of this term precise, this term means clearly or sharply defined। Okay, clearly or this term precise means clearly or sharply defined। But one point we can note that the precision instruments are not guaranteed for accuracy। Something is precise, it doesn't mean that that is accurate also। You can relate with this figure that if the true value of any measurement is here and the values which we are getting is like this, it's like this, it's like this,
It is a case where the values are neither precise nor accurate. Okay, and if you see the true value here, and the values obtained are coming like here. Since all values are here, we can say in this case that values are precise. Okay, means this is a case of precise values. But accuracy, all the values are not close to true value. So this here values are precise but not accurate. But if we'll see the similar case in such fashion that the values measured are close to true values, means the degree of closeness is satisfied and also they are precise. So here we can say the values are precise. Also we can say the values are accurate. Okay. So I think the concept of accuracy and precision is a little bit clear now. So one point you can note, precision depends upon the number of significant figures. The more number of significant figures, the more is the precision. Okay. So this is the concept you can note. Like for example, you can see if I'm measuring some current and that current's value is 110 amperes. So here the significant figure is 3. Okay. At the same value, if we are saying that 110.10 ampere, then in this case the significant figures are, you can see, 5 significant figures. Okay, so more number of significant figures here, so the values are more precise. You can understand like that. So what these significant figures, the number of significant figures signifies, these number of significant figures convey actual information regarding the magnitude and the measurement precision of a quantity. So now let us move on to some other characteristic. This is another important characteristic of instrument, that is linearity. If you will see this characteristic, the linearity characteristic of an instrument, this term clearly signifies that the output varies linearly with the input. Means output is proportional to the input. Then in that case, the instrument will be called linear, or the instrument will be said to follow the property of linearity. लेकिन अगर एक पॉइंट आप नोट करो तो लिनियरिटी फॉलो कर रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो चलो एनालिसिस उसका आसान है, लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट नॉन लिनियरिटी को फॉलो कर रहा है तो आप ऐसा बोलोगे कि वो इनएक्यूरेट होगा, वो इनएक्यूरेसी की तरफ ले जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है. Non-linear behavior of an instrument does not essentially lead to inaccuracy. This point may be noted. और ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक लीनियर हो ताकि उसका एनालिसिस आसान हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, तो उस पोटेंशियोमीटर में जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो रेजिस्टेंस वैरी करना चाहिए लीनियरली विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. ओके, तब क्या होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वोल्टेज के. लेकिन अगर उस लिनियरिटी के केस में डेविएशन होता है तो एरर देखने को मिल सकता है हमारे मेजर्ड वैल्यू में, जो कि अनडिजायरेबल है. सो लिनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक का प्रॉपर्टी यही है कि अगर हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट रिलेशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उस इनपुट आउटपुट रिलेशन को लीनियरली वैरी करना पड़ेगा. उसके वैल्यूज एक्चुअली ये लीनियर ना भी हो, डेविएशन का कॉन्सेप्ट दिख भी सकता है, लेकिन आइडियलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है कि वो सिस्टम लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करे. मींस हमारा इंस्ट्रूमेंट लीनियराइज हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है. Means the characteristic of linearity signifies the proportional variation of input with respect to the output. Okay. Now if you see other various characteristics of instruments, these are span, resolution, repeatability, reproducibility, static sensitivity, calibration, hysteresis,
डेड टाइम एंड डेड जोन, ड्रिफ्ट, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक बार तेजी में गो थ्रू कर देते हैं हम लोग। जैसे कि स्पैन, व्हाट इज स्पैन? स्पैन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेंजेस ऑफ एनी मेजरमेंट। तो इसके बाद रिजोल्यूशन को देखते हैं हम लोग। रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली। ओके, द स्मॉलेस्ट चेंज of the particular instrument which can be reliably detected by the instrument. So this is resolution. What is repeatability? The word itself signifies that जो भी मेजरमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं उनको रिपीट करने के बाद भी वो ऑब्टेन्ड मेजरमेंट वैल्यू सेम आते हैं या नहीं आते। यही फैक्टर रिपीटेबिलिटी फैक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। So this repeatability allows us to measure how close a particular result or a set of data is when it is compared to the same measurement made with the same device or instrument under the exact same circumstances. Okay, तो उसके बाद reproducibility, ये क्या होता है? Reproducibility is the degree of closeness with which a given value may be repeatedly measured. Okay, so we can measure the values again and again in a repeated fashion, and we can say that how close the values are. So this is the degree of closeness with which a given value may be repeatedly measured. और इसको हम लोग किसी यूनिट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ व्हाट इज static sensitivity? Sensitivity, we know that it is the change in output upon change in input. So what is the static sensitivity? The static sensitivity of an instrument is the ratio of the magnitude of the output signal or response to the magnitude of the input signal or the quantity being measured. So this is simply the ratio of output upon the ratio of input. Okay, so if you see the units of static sensitivity, the units can be varying. Like for example, we can say the units can be millimeter per microampere, or the units can be per volts. Okay, so units can be like this. Okay, let us move on to the calibration. What is calibration? This calibration is simply, we can say that it is a process of establishing the input output relationship of a measuring device. Okay, and this calibration of all the instruments is important since it affords the opportunity to check the instrument against a known standard and subsequently to find the errors and accuracy. So the calibration is something like if we have some measuring instruments, we have to measure 10 volts, but it is actually showing 9 volts. So we need to calibrate. So this type of systematic error can be avoided by calibration. So this can form the basis for a standard of acceptable accuracy. Now what is hysteresis? This hysteresis in case of any instruments is a phenomenon under which the measuring instruments show different output effects during loading and unloading. Since we know the basic hysteresis curve, it is something like this. Okay, so here if we see, if we are taking the input here, then corresponding to this input, we are having one output and another output. Two outputs are there. So such different output effects during loading and unloading, such case is known as the phenomenon of hysteresis. So this hysteresis results from the inelastic quality of the instrument. Okay, now what is this dead time and dead zone? If you see the dead time, this dead time is the time required by an instrument to begin to respond to the change in the measurand. So whatever is being measured, that is measurand. And the time required by an instrument to begin to respond to the change in that measurand is known as dead time. And what is the dead zone? The largest change of the input quantity for which there is no output of the instrument. So that is called the dead zone. Okay, so if you see graphically, so if some input or the measurand, we can say, is following this curve, that is input or measurand, and the output is following the curve like this.
Okay, this is output. So if we'll see this zone, this is dead zone, and the time period here, this is dead time. So this was dead time and dead zone. After that, what is drift? Drift means the change in the output over a period of time. You can observe various types of drift, like you can see zero drift or you can see full scale drift. Okay, so zero drift can be like the variation of output at zero input, and the full scale drift and the full scale drift we can see it can be like this. Okay, so this we can call as drift. So the points which we can remember is that sensitivity is output upon input, we know, and this sensitivity is inversely proportional to the deflection factor. Okay, and for a good instrument the sensitivity value should be high. Okay, but we can note one point, that linearity is more important factor than the sensitivity. Okay, and also the accuracy of any instrument is more important than the resolution. Okay, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्पैन है इसको हम लोग रेंज से कंफ्यूज नहीं करेंगे. Okay, now we will move to the important concept of error analysis. Now let us see about the error. Error is deviation of measured value from its true or desired value. Okay, so it can be either positive or it can be negative. Okay, now if we will see the classification of error, it can be classified as gross error, it can be systematic error, or it can be random or probable errors. Now, what are gross errors? Gross errors are errors due to human mistakes, or we can say it is just because of carelessness. It can be because of incorrect adjustment or improper application of the instrument, or we can just say, or we can just misread the instruments. So it can also be the cause of gross error. So if we want to avoid this gross error, what can we do? So we can just take multiple readings. So this gross error, that is human error, this can be just avoided by taking multiple readings. Okay, so if some error is a mistake, it will show some derivative value. So, so just this human error is gross error. Now what is systematic error? Okay, systematic errors are further classified into three more types. So this systematic error can be further classified into three more types. Okay, one is constructional or instrumental error, other one is environmental error, other one is observational error. So this constructional error is error due to inherent shortcomings of the instrument. Okay, or the errors due to the defective parts of the instrument. So we can take an example of PMMC coil. In that case, the permanent magnet is involved. Uh, in that case, the permanent magnet is involved. So due to aging in the magnets of PMMC coil, the readings changes a little bit. So that error due to the aging of the instrument, that aging of the permanent magnet, we can say that is instrumental error. Okay, so उसके बाद अगर हम लोग देखें environmental error को, तो what is environmental error? It is just the error due to the temperature or due to humidity or due to stray field. So changing environmental condition lead to some error, that is environmental error. Now what is observational error? So observational error, one common example is parallax error. This observational error is just the error which we can observe. Okay, so this parallax error, it can be eliminated by providing some mirror over the scale. Okay, that is we have to avoid the mirror reflection. So these types of error comes under the systematic error.
Now, what are random or probable errors? These random or probable errors are the errors which occur randomly. The name itself shows that the error which occurs randomly is a random error. So for these random errors, the complete elimination is not possible. So what can we do to minimize these random errors? We can just take the averaging. We can just take the average of the readings. Okay. So as the dispersion of the readings can be minimized, or these errors, these random or probable errors can be minimized using the Gaussian statistical analysis. Okay, these can be the ways to minimize this random or probable errors. So we have seen these three types: the gross error, systematic error, and the random errors. Now let us see some mathematical analysis of this error. Okay, so this error is simply the difference between the measured value and the true value. Now we can demonstrate the static error with this formula. This is the measured value and this is the true value of the reading. Now if you see the formula of relative static error, it can be the ratio of static error to the true value of the quantity. And if you see the formula for static sensitivity, this is equal to, where this delta Q naught is infinitesimal change in output, and whereas this delta Qi is the infinitesimal change in the input. Okay. Now let us assume that any sensor is following this relation y is equal to mx plus c. So is it a linear relationship? This will be completely linear when c is equal to 0. But let us assume c not is equal to 0 and the sensor is following this relation. Okay. So we can also assume the example of Ohm's law. Okay, V is equal to IR. So this is simple Ohm's law. Okay, we all know that. This Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that the temperature and other physical conditions remain constant. Okay, so this potential difference is directly proportional to current. This proportionality constant R comes into picture where R is called the resistance of the conductor. Okay, this we all know. So if we are plotting the graph between V and I, this should ideally follow this relation. Okay, but in the case of measurements, we can observe the variation of the voltage and current in some different fashions, like this and this. This, in actual practice, the curve between the voltage and current should not be that linear. Okay, thus that relation faces some deviation. Okay, so whatever is this linear relation, this linear relation is made from the best fit points, and these varying points are actual data points. Okay, so whatever is the variation here, we can say these variations to be producing some error. Okay, and that will be least square error. And following that linear relation, we can write the relation to be like I is equal to mv plus c. Okay, and this c, we'll assume the ideal case, this c will be 0 ideally. Okay, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें
तो ये एम भी प्लस सी प्रैक्टिकली आई के इक्वल नहीं होता है। ओके, so whatever will be the error we can calculate relating this। so इस एग्जाम्पल को रिलेट करके हम लोग जो भी एरर होगा उस एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे एरर क्या हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट अगर हम लोग देखें तो उसमें कुछ एरर आने के चांसेस हैं, और एरर किस रिलेशन से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लाइक ई आई इज इक्वल टू एम वी आई प्लस सी। ओके, this is just the observed value, and if we subtract it from the actual value of the current, this will be the error. So assuming this case, we can say the error coming here will be like this. So whatever the error expression we got is E of I is equal to mv of I plus C minus II. This is true value, this is measured value, and the difference between both gives the error. The difference between both gives the error. Now if we will square on both sides, we can get EI square is equal to MVI plus C minus II square. Okay, and since we are taking different readings, so we can have a summation to both sides. So यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है उस केस में हम यहाँ पे इस M का और इस C का अगर डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन कर दें तो उससे लीस्ट स्क्वायर एरर या फिर जो प्रोबेबल एरर होगा उसका आइडिया लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डेटा पॉइंट M और डेटा पॉइंट C का वैल्यूज ऑब्टेन करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक बार तो इसे जीरो से इक्वेट कर सकते हैं और एक बार इसे C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या बच के आते हैं। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं M के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एम सिग्मा ई आई स्क्वायर is equal to 0. So here what will be the differentiated value? That will be 2 sigma mvi plus c minus ii into this term vi is equal to 0. So that will be sigma mvi plus sigma cvi minus sigma vi into ii is equal to 0. So this will give sigma vi into ii is equal to sigma m vi, sorry, here this was vi into vi square, mvi square plus sigma c vi. This is one relation which we are getting. Now if we will differentiate the above term with respect to c, then what we will get is d upon dc sigma ei square is equal to 0. Then in that case 2 sigma mvi plus c minus ii into 1 is equal to 0. Okay, so here we will get
सिग्मा आई आई इज इक्वल टू सिग्मा एम वी आई प्लस sigma c. And this term is nothing but n into c, where n is the number of measurements. Okay, so there is nothing to confuse. तो अभी हमारे मन में सवाल आएगा कि ये आखिर ऐसी एनालिसिस हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, एक इक्वेशन और दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में से जो डेटा पॉइंट्स m और c का वैल्यू, ये दो इक्वेशन है और दो अननोन्स है यहाँ पे, ठीक, m और c। ओके, यहाँ भी m और c। सो ये जो दो इक्वेशंस और दो अननोन्स हैं, इसमें जो डेटा पॉइंट्स m और c की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, उससे द लीस्ट स्क्वायर एरर, जिसे कि प्रोबेबल एरर भी बोलते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं हम लोग। और इस मेथड को, इस पूरे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व फिटिंग मेथड भी बोलते हैं। ओके, कर्व फिटिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे और ये जो ट्रू वैल्यू है और वो जो ये जो ट्रू वैल्यू है और ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ओके, सो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो एरर की वैल्यू देगा। इसी केस को अगर जनरलाइज करें सिंपल एक्स और वाई के टर्म में और एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो थोड़ी क्लियरेंस और देख सकते हैं। जैसे इस दोनों एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगर v और i को छोड़ के मैं x और y बस ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होंगे, सिग्मा वाई आई एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा सी एक्स आई। ओके, एंड एक दूसरा इक्वेशन जो था वो था सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स आई प्लस सिग्मा सी। ओके, the same equation we have written in the term of y and x, y is equal to mx plus c। just assume the y is equal to mx plus c वाले फॉर्म से हम लोगों ने एरर के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को निकाला है, ठीक है। इन इक्वेशंस का यूज करके हम अगर m और c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y is equal to mx plus c जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, जहां हम लोग x और y के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, तो m और c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो डेटा पॉइंट्स हमें इसके रिलेशंस को प्लॉट करने में हेल्प प्रोवाइड करें, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने पूरी एनालिसिस की है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ x और y की वैल्यूज देते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, और y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 4 5 6 एंड 8। ओके, तो अगर इन इक्वेशन से इस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज को एनालाइज करें, जो हमारे पास गिवन डेटा है x और y, ठीक है, तो उस एनालिसिस से हम लोग m और c की वैल्यूज कैसे निकाल पाएंगे, लेट अस सी। सबसे पहले तो हम इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इन इक्वेशंस में, वो देखते हैं। सिग्मा एक्स आई हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, सिग्मा एक्स आई वाई आई ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा वाई आई ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके दो इक्वेशंस निकाल सकते हैं जिसमें दो अननोन्स होंगे और उससे m और c की वैल्यू आएगी। तो वो m और c इन सारे गिवन डेटा के करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके देगी हम लोगों को, ठीक है। तो वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इस एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा एक्स आई निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स आई दैट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट विल बी 15। उसके बाद हम लोग सिग्मा एक्स आई वाई आई इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 × 3 + 2 × 4 + 3 × 5 + 4 × 6 + 5 × 8। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 3 + 8 + 15 + 24 + 40
और ये होगा 90। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालें तो उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ओके, दिस टर्म सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर विल बी 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square. That will be 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. और वो आने वाला हम लोग का 55। तो उसके बाद सिग्मा वाई आई, इसे भी कैलकुलेट कर लें तो वो आने वाला 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 और ये आ जाएगा 26। तो इन सारे से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल बी सिग्मा वाई आई एक्स आई इज 90 इज इक्वल टू m into sigma xi square m into 55, okay, 55m plus c into sigma xi plus c into sigma xi plus 15c, okay. And the second equation will be sigma yi means 26, 26 is equal to sigma m xi means sigma xi here is 15, 15m plus sigma c, sigma c, what will be the value of sigma c? Sigma will be the number of readings, nc. It is clear. Here number of readings are 1, 2, 3, 4, 5. 5 readings. So 5C we can take. No doubt. So if we will solve these two equations, on solving these two equations, we will get the value of M and C. And these will be, so you can solve these values. These will be 1.2 and 1.6. So therefore, we can establish a relation between x and y. Based on this relation, y is equal to ms plus c. So the relation will be y is equal to 1.2x plus 1.6, y is equal to mx plus c. So this is the relation between y and x. So based on this relation, we can see that whatever is the value of y, whatever the actual value of y, that is 3, 4, 5, 6, 8, and based on this relation, if we will calculate the value of y, is y1, y2, y3, y4, y5. So what we will get will be like this. Let us see. Y1 is equal to 1.2 plus 1.6. That will be 2.8. Okay. And the actual value is 3. C. Similarly, the second value, y2 is equal to 1.2 into 2 plus 1.6. This will be 2.4 plus 1.6. That will be 4. The actual value is 4. This is satisfying. This value is satisfying. Y3 is equal to 1.2 into 3 plus 1.6. So here this value will be 5.2. And this value you have seen y3 is 5. So a little bit of deviation is coming. Now similarly y4, 1.2 into 4 plus 1.6. इस केस में y4 की वैल्यू आ रही है 6.4 और एक्चुअली है यहाँ पे 6. नाउ द लास्ट वैल्यू y5, 1.2 into 5 plus 1.6 और ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो आने वाली है 7.6 और यहाँ पे है 8. डेविएशन दिख रही है और डेविएशन कितनी है अगर ये आप देखना चाहो तो यहाँ पे है डेविएशन 0.2 का. ओके, दिस इज द डेविएशन. सो यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन कितनी है? मैक्सिमम डेविएशन 0.2, यहाँ पे 0. ओके, यहाँ पे y3 की वैल्यू 5 और यहाँ पे 5.2 तो डेविएशन 0.2. यहाँ पे
y की वैल्यू 6, यहाँ पे 6.4, तो डेविएशन 0.4, और यहाँ पे वैल्यू थी 8, यहाँ पे 7.6, तो वैल्यू फिर से 0.4। ये सारे डेविएशंस जो हमारे पास आ चुके हैं, इनकी वैल्यूज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए हम लोग y वर्सेस x को प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो भी नॉन लिनियरिटी एरर आएगी, नॉन लिनियरिटी एरर, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक टर्म हमारे पास होता है आर स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आर स्क्वायर, जिसको कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसको भी कैलकुलेट करना हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे इस कर्व का गुडनेस फिट कितना था। वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गुडनेस फिट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो इस पूरे एनालिसिस से हम लोग ये नॉन लिनियरिटी एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और एक आर स्क्वायर, इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप परसेंटेज नॉन लिनियरिटी के फॉर्मूले से परसेंटेज नॉन लिनियरिटी निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, जिससे परसेंटेज नॉन लिनियरिटी इज इक्वल टू लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड से परसेंटेज नॉन लिनियरिटी को निकालना सीखा हमने। और उसके बाद हम लोग ये आर स्क्वायर टर्म के बारे में देखने वाले हैं, जो कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ये किसी भी कर्व के गुडनेस फिट को बताता है। ये जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये y बार जो है वो y का, ये y बार जो है y का मीन वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग प्रीवियस एग्जांपल के लिए परसेंटेज नॉन लिनियरिटी निकाल सकते हैं और प्रीवियस एग्जांपल के लिए आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस वैल्यूज थी हमारे पास, वो थी तो हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल में वैल्यूज थी वो है 1, 2, 3, 4 और 5। तो y में थे 3, 4, 5, 6 एंड 8। उसके बाद जो y कैप है वो यहाँ पे देखिए 2.8, 4, 5.2, 6.4 और 7.6। उसके बाद yi माइनस y कैप, जो डेविएशन है वो कितना है। पहले केस में 0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.2। ओके, तो ये हम लोग विथ, अगर अगर इसको विथ सिंबल लिखें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कंसीडर करके, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें 2.8 और 3 मींस 3 माइनस 2.3 माइनस 2.8, ये प्लस 0.2 था, ये 0, ये 5 minus 5.2 is minus 0.2. This is 6 minus 6.4 minus 0.4. Here 8 minus 7.6 is plus 0.4. Okay, so these values we can write. Now just square these terms. So we will get 0.2 ka square 0.04, 0, 0.04, 0.16 and 0.16 again.
Now y mean, we are subtracting yi minus y mean. So what will be y mean here? If you will calculate y mean, that will be 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 8 upon 5. So this will be 5.2. So just put the value of y mean in this table and get the value. So 3 minus 5.2, this will be minus 2.2. Similarly, we have put all the values and we will square all these values. Adding all, we will get 14.80. Now, if we want to calculate r square from here, so just we can write the formula and implement that formula. So that will be 1 minus this summation is 14.80 if I am not wrong, and this summation is 0.4. So just put this value here. So whatever we will be getting, that will be the value of r square. So its value will be from 0 to 1.